Now, in the continuation of convergence in measure, now we will do the next definition is Cauchy sequence in measure. पहले हमने पढ़ा convergence in measure. Now we will study Cauchy sequence in measure, or it is also called fundamental in measure. A sequence Fn of measurable function is said to be Cauchy sequence in measure. सबसे पहली बात यह है कि सीक्वेंस जो है वो मेजरेबल फंक्शंस का होना चाहिए. दूसरी बात है कि वो कॉची कब होगा, जिसे हम कॉची की डेफिनेशन इन जनरल लगाते हैं an minus am its mod is less than epsilon for all nm greater than or equal to m naught. ये कॉची सीक्वेंस ऑफ नंबर्स की डेफिनेशन है. उसी तरह हम डेफिनेशन लगाएंगे कॉची सीक्वेंस इन मेजर की. We will choose a epsilon, we will choose a positive integer so that the measure of all the set of points where Fn and Fpa, their difference, absolute difference is greater than or equal to epsilon. This is less than epsilon for all np greater than or equal to capital N. So convergence और इसकी definition में difference कहाँ है, वहाँ हम लिखते थे fnx minus f of x, right? अब यहाँ हम लिख रहे हैं कि difference between any two elements of the functional values, right? When it is greater than or equal to epsilon, all such points will satisfy this condition, its measure is less than epsilon. So now the question is, if a sequence Fn converges to a measure to f, then Fn is a Cauchy sequence in measure. मतलब convergence in measure. So we can write it as convergence in measure implies fundamental convergence in measure. Implies fundamental in measure. ये हमें प्रूव करना है, राइट? मतलब ये हुआ कि एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रहा है इन मेजर. टू प्रूव क्या होगा, एफ एन जो सीक्वेंस है वो एक फंडामेंटल इन मेजर है. तो डेफिनेशन में जब हमने डेफिनेशन लगानी है इसके मॉड, इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, तो सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इट विल हैव अ मेजर लेस देन एप्सिलॉन, राइट? टू प्रूव क्या आएगा, ये गिवन है क्योंकि एफ एन एफ को टेंड करता है, राइट? टू प्रूफ के लिए हमें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेना है एफ एन माइनस एफ पी का डिफरेंस. दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, और इस सेट का जो मेजर है वी विल प्रूव दिस इज लेस देन एप्सिलॉन और इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज टेंडिंग टू 0. So Fn is converging to S, so we will put the definition of convergence in measure. Now हमें पहुंचना कहाँ है, Fn और Fp mod का डिफरेंस पे पहले हम उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. अब इनके बीच में मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, एक्स एफ ऑफ एक्स कर रहा है. तो यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी खुल गई. अब इस सेट को इन दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, तो इसका मतलब दिस द सेट ऑफ पॉइंट्स, दिस इज कंटेन्ड इन दिस यूनियन दिस, राइट? और दोनों जो है वो अपने आप में disjoint sets हैं. So this is when you will take the measure, here is less than or equal to, और यहाँ पे दोनों जगह सारे सेट्स के साथ क्या आ जाएगा, एक तो मेजर आ गया, नंबर 2 और कंटेंट के साइन बन गया लेस देन और इक्वल टू में. तो नाउ व्हेन वी विल टेक n tends to infinity, p tends to infinity. So when you will take n tends to infinity, already f and f को क्या कर रहा है, convergence in measure, doesn't matter it's n tend to infinity or p tends to infinity, it is converging in measure. So इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. So therefore जब उनकी वैल्यू 0 हो गई, it implies limiting value. So एंड में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, लिमिट n और p दोनों के लिए यहाँ पे दो लिमिट्स के ऊपर काम हो रहा है. हम ऐसे भी लिख सकते हैं such that fnx f minus fpx, right? Its mod greater than or equal to epsilon is equal to 0. Or we can choose the positive integer capital N. हमने एक positive integer choose कर लिया, ये सारी quantity लिख के this is less than epsilon for all n and p greater than or equal to n. Therefore Fn is a Cauchy sequence in measure. So convergence in measure implies, you can write convergence in measure implies fundamental in measure. Right?